The biggest reason for any shortfall now would be, of course, the US scenario. Since US till before this tariff issue was around 28% of India's textile and apparel export market, that part of it is surely going to get impacted. The second quarter of the last financial year, there was a lot more hope that we are going to break through. The India-US negotiations will see the day of light by the end of the year. Since that has not happened, there is some more pessimism now, but it is a very important market. So it is 30% largely of our textile and apparel trade is today under doubt. There will be a shortfall of around 50% in the trade between January to March quarter. How do you see this report? What is your take on this? See, the biggest reason for any shortfall now would be, of course, the US scenario. Since US till before this tariff issue was around 28% of India's textile and apparel export market, that part of it is surely going to get impacted. The last quarter, that is September-December 2025, the exporters managed somehow through negotiating either better rates or some other way, because textile and apparel, especially apparel made up, which is what the US market is all about. We are one of the largest suppliers of made ups to the US. Is also a little trend and relationship based, so things don't end suddenly. But of course the strain was felt. But this quarter, that is January-March, is where the pessimism is now finally seeping in, because in that quarter, the second quarter of the last financial year, there was a lot more hope that we are going to break through. The India-US negotiations will see the day of light by the end of the year. Since that has not happened, there is some more pessimism now, but it is a very important market. So it is 30% largely of our textile and apparel trade is today under doubt. You are to this trade deal between India and the US, because there are sort of some statement. Some senators from yes, as industry bodies and councils, we have been talking to not just the government but our counterparts in those countries, and what we understand is that India has given its good offer. We have shown all our intent to be a good partner, and we look forward to the US side to reciprocate that. The industry at both ends want this to get resolved. We have had a very old ties with US. It's an important market for garments, low and mid-end garments and made-ups. But I think it's still a very speculative situation. Nobody for sure knows what do we see in the days ahead. Especially in the last 1 or 2 days, some new talks, new signals of more tariffs being imposed on India is of course not increasing the optimism at all. So we are just looking forward to any good news breaking through in this meanwhile. See, when it comes to the outlook, we are of course looking beyond US. US, if it happens, it will be a great thing. But if it doesn't, then also if you look at the last export estimates that came in December for our performance till November, I think we showed some resilience. We showed some increase, around 12% increase we could show, which I think is an indication that the industry is learning to diversify. Of course, diversification of 30% of your market cannot be done overnight. It will require a lot of spade work. And that's where some good policy support is what the industry is looking forward to. In fact, yesterday the Parliamentary Standing Committee had a meeting with senior industry people in Coimbatore, where the matter was discussed. CITI has been doing surveys for the last 2 quarters as to how the US tariff issue is panning out for the businesses, and we surely see a lot of pressure on them, because
in spite of the best of negotiations, from January the trade seems to be looking pretty dismal, and hence this is a critical time for all kind of measures to ensure cost competitiveness. So, what is your expectation from this budget? We are surely looking at increasing the scope and depth of the financial and the export related support that has been announced so far. Some of them so far were only for the direct exporters, but as we know that the demand and the stagnation in this value chain is across the value chain, we have also asked for the export incentives and the credit incentives to be given across the value chain. So if we are talking of direct exporters in the apparel and made-up sector, the suppliers to them, be it the fabric or the yarn segment, today are also looking for some support, because the pressure on prices is being felt by the entire textile value chain. जनवरी मार्च क्वार्टर में 50% का हम वो एक्सपोर्ट में गिरावट देख सकते हैं, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, जो यूएस वाला मार्केट है वो हमारा नियरली 30% आवर मार्केट है, उस मार्केट में तो बहुत प्रेशर दिख रहा है. मैं बोलूंगी हमारे इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया कि सितंबर से दिसंबर में फॉल नहीं होने दिया. सबने विद द बेस्ट ऑफ देयर नेगोशिएशंस दे ट्राइड टू कंटिन्यू, मतलब उन्होंने ट्रेड को कंटिन्यू करने की कोशिश की, बट ये सारा इस उम्मीद में था कि बाय दिसंबर यूएस इंडिया का कुछ ट्रेड डील बन पाएगा और हमारा प्राइस पे जो प्रेशर है, हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है वो उसमें कमी होगी. एटलीस्ट 25% जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो कम हो जाएगा. बट अभी उसका जब कोई बहुत सुनिश्चित टाइमलाइन नहीं देखा जा पा रहा है, तब ऑफकोर्स पेसिमिज्म बढ़ गया है. इंडस्ट्री अभी बहुत कंसर्न्ड है, बट साथ ही साथ इंडस्ट्री बाकी मार्केट्स को भी अब देख रही है. उनको पता है कि उनके सर्वाइवल के लिए अभी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट बहुत जरूरी चीज हो रहा है. तो ये दोनों तरफ से चल रहा है, पर कोई भी मार्केट बहुत जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली जब वो इतना बड़ा मार्केट था आपके लिए. स्पेशली जो आपके टावल्स, बेड लिनन्स एंड होम टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स है, उसके लिए यूएस हमारा बहुत बड़ा मार्केट था, और वहां पे हमें थोड़ा धक्का तो लगेगा अगर ये ट्रेड डील अब जल्दी से जल्दी नहीं खत्म हो पाया. तो जरूर अगर आप नवंबर का वो देखेंगे आंकड़े, तो आपको दिखेगा कि हमने कुछ रिकवरी की होगी, क्योंकि हमारे नवंबर के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई थी. 12% का ग्रोथ देखा गया था ट्रेड में. बस यही है कि वहां पे हमें समझना होगा, ये सारे इंटरिम मेजर्स ले रहे थे हम. इंडस्ट्री तो चाहेगी कि उसके सर्वाइवल के लिए जितने तरीके अपनाए जाए, चाहे आप प्राइस में नेगोशिएट कर लो, आप थोड़े नए रूट्स निकालो, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसको बनाने के लिए अभी काफी सारे और काम करने पड़ेंगे. एक तो पॉलिसी सपोर्ट की अभी बहुत जरूरत होगी. एक्सपोर्ट मार्केट इंसेंटिव्स जो अभी कुछ घोषित किए गए हैं उनमें थोड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी. न्यू मार्केट्स तो जरूर देखने पड़ेंगे. यूरोप पे हमारा फोकस और बढ़ाना पड़ेगा. हम ईयू और यूके एफटीए के फाइनलाइजेशन के लिए बहुत बेसब्र है अब, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक सपोर्ट है, क्योंकि यूएस के बाद यूरोप ही हमारा सबसे बड़ा मार्केट है. अराउंड 37% हमारा मार्केट है वो. तो वहां पे अभी के लिए तो हमारा 9.6% का टैरिफ डिफरेंशियल है हमारे मेजर कॉम्पिटिटर्स से. वो कम हो जाता है, या कोई भी और कॉस्ट इंसेंटिव से वो वाला जो हमारा कॉस्ट डिफरेंस है वो मीट हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं इस मार्केट में. और यहाँ के ग्रोथ से हमारा जो यूएस का ग्रोथ में कमी हुई है उसको थोड़ा सा हम सुधार सकते हैं. यही दोनों चीजों पे जो हमारा कुछ सेगमेंट्स में हमारा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस है. काफी सेगमेंट्स को ट्रेडिशनली क्रेडिट एक्सेस कम मिलता है. ये सारे जो इश्यूज है इनको इस बार देखा जाए. वस्त्र मंत्रालय ने इस पे काफी चर्चा की है, उन्होंने इन बातों को समझा है, और इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि जो क्रेडिट के जो रेट्स है, जो एक्सेस है और जो बाकी सपोर्ट है, उसमें बढ़ोतरी होगी इस बजट में.